Hello dear students, I am Pratima. I welcome you all to this video. So we will learn converse of midpoint theorem, class 9 geometry. We have already learned midpoint theorem. If you have not watched it, you may watch. The link will be given. Going for the statement of the theorem. Theorem states that the line drawn through the midpoint of one side of the triangle parallel to another side bisects the third side, the statement of theorem. For this, you need a figure. Next, you will go for a figure. So let us draw a triangle, name it A, B, C. Next is your E is midpoint of your AB. And through E, we'll draw a line parallel to BC. We'll draw a line parallel to BC. So E is the midpoint. We have drawn the line parallel to BC, which is intersecting AC at F. Now you have to prove that AF is equal to FC. We have to prove it. It's not given. We have to prove it. So for this, I need a construction. What is it? Construction is through C, I'll draw a line parallel to AB. Okay, so whatever we learned, let us write. So this will be construction. Through C, I'll draw a line parallel to your BA, which will intersect produced EF at D. Okay. So let us write. First is given. What is given? In triangle ABC, E is midpoint of AB. And EF is parallel to BC. We need to prove F is midpoint of AC, or AF is equal to FC. Now I need a construction, same construction what we did in your midpoint theorem. Can you recall? A line parallel to BA drawn through C. So through C, draw CD parallel to BA. This is intersecting produced EF at D. Now proof. So in construction, I'm writing one more line. So CD parallel to your BA intersects produced EF at D. Next is proof. Proof, I'll show these two triangle congruent. For this, first I'll prove that BCDE is a parallelogram. What is the condition? Condition is BC is parallel to EF. It is your given. And EBE is parallel to CD. Why? Because BA is parallel to CD by construction. So I am getting E, B, C, D
is a parallelogram because pair of opposite sides are parallel. So when they are parallel, EB is equal to CD. EB is equal to CD. What else? Similarly, EF is equal to EBC, ED is equal to BC, but I am not writing all this. Now coming to, I'll show the congruency of triangle in triangle AEF and your FDC, CDF. First is I am taking vertical opposite angle equal. So angle AFE is equal to DFC. Why? Because vertical opposite angles. Next I'll get your alternate angle equal. So EAF is equal to FCD, alternate angles. And what else? I'm getting EA is equal to CD. Why? EA is equal to BE. EA is equal to CD. Why? EA is equal to your EB. The E was midpoint. This was given. So EA is equal to CD. So by AAS, triangle AEF is congruent to triangle CDF. When they are congruent, I can write AEF is equal to FC. So AF is equal to FC by CPCT, corresponding part of congruent triangle. So when F is equal to FC, so F is midpoint of AC. Proved. मैं रिपीट कर रही हूँ थोड़ा सा. पहले हमने एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, E इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल खींचा हुआ है BC के साथ, और बोल रहे हैं कि ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब जो F पॉइंट होगा वो AC को बाइसेक्ट करेगा. इसका मतलब है AF FC हमको प्रूव करना है. तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले एक लाइन पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया थ्रू C. BA के साथ हमने CD को पैरेलल खींचा और ये प्रोड्यूस्ड EF को D में इंटरसेक्ट किया. उसके बाद EBCD को हमने एक पैरेललोग्राम दिखाया. कैसे? ED इज पैरेलल टू BC एंड ये पैरेलल टू दिस. एक कंस्ट्रक्शन एक दिया हुआ था, तो ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है. तो EBCD के साथ इक्वल हो गया, EBCD के साथ इक्वल हो गया, EBCD के साथ इक्वल. तो EBCD के साथ इक्वल है और EBEA के साथ भी इक्वल है, क्योंकि ये E मिड पॉइंट दिया हुआ है. अभी ये दोनों ट्राइंगल AEF और FCD को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे. फर्स्ट इज एक साइड इक्वल है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और एंगल EAF FCD के साथ इक्वल है, अल्टरनेट एंगल. आप बोलेंगे ये एंगल को भी तो दिखा सकते हैं. हाँ, ये एंगल को भी दिखा सकते हैं. कोई दो एंगल एक साइड हम लिख रहे हैं. सो बाई AS दो एंगल एक साइड, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, AF FC के साथ इक्वल हो गया. AF FC के साथ इक्वल होने का मतलब है F AC का मिड पॉइंट हो गया. आई होप यू हैव फॉलोड.
So thank you for watching, and like the video, share the video, or you can comment if anything is not understood. Thank you for watching.